Okay, so in case of plane wall, we have discussed overall heat transfer coefficient. Overall heat transfer coefficient, the numerical value is inverse of R value. And now, what if we have a cylindrical system, और हमारे पास let's say there is a heat exchanger जिसमें there are two fluids. One is fluid A, which is flowing inside the pipe. Pipe is having some thickness, and outside the pipe, in the shell side, there is another fluid flowing in this direction. So again, we have a convection and conduction combination. Now in this case, we are assuming a fluid A temperature is greater than temperature of fluid B. So heat will be rejected by fluid A and it will be gained by fluid B. The pipe is having some thickness as well. So again, we have two convection resistances and one conduction resistance. Remember, thermal resistance for conduction is of radial system, और हमारे पास inside convection heat transfer is represented by HI, and outside जो fluid है outside the pipe convection heat transfer coefficient उसकी H naught से represent की गई है. लेकिन we have to be careful about this area exposed to heat transfer for the two fluids. Since we can observe the inside radius of pipe is different from outside radius of pipe. In other words, we can say the circumferential area of fluid A, the fluid A जिस area को exposed है उसका area different है fluid B के area से. That is the reason we have written AI here and A naught for the outside convection. In case of plane wall, हमारे पास area throughout same था. You can see area was same in case of plane wall. लेकिन for radial system this area is not same, बल्कि ये हमारे पास चेंज हो रहा है बिकॉज रेडियस हमारे पास डिफरेंट है इनसाइड पाइप के लिए और आउटसाइड पाइप के लिए. Now we can also discuss the previous case हीट एक्सचेंजर का केस. हम डिफरेंट व्यू से अगर देखें तो हमारे पास लेट्स से this shaded region represents the solid pipe जिसकी thickness हमारे पास R2 minus R1 है. So this region is the solid pipe जो मैंने इधर red shaded show कर लिया है. inside the pipe जो हमारे पास hollow section है उसमें हमारे पास fluid है और पाइप के बाहर एक दूसरा fluid है. तो बेसिकली हमारे पास one convection resistance होगी due to this convection which is occurring inside fluid और पाइप के इस सरफेस के दरमियान, और हमारे पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर अकर होगी पाइप के आउटसाइड सरफेस और आउटसाइड फ्लूइड के दरमियान.
so you have to be careful about this. और अगर मैं इस पाइप को किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से रैप कर लूं तो हमारे पास एक एडिशनल conduction resistance occur होगी, and I expect you guys to cover this before attending the online lecture. So now we have this AI, which is internal या inner circumferential area exposed to convection heat transfer, and we have A naught, which is outside circumferential area exposed to convection heat transfer. And we have in this case just one conduction resistance. अगर हमारे पास solid surfaces की layers ज़्यादा होती हैं, so we will add conduction resistance here. Now discussing overall heat transfer coefficient for this system, which is a bit different from plane wall because हमारे पास inside और outside surface areas different हैं for cylindrical systems. So the overall heat transfer coefficient हम inside और outside surface के लिए अलग अलग define करेंगे. How this is so उसके लिए on the inner surface area, so हम equation के दोनों sides को so we are discussing overall heat transfer coefficient for the cylindrical system, and in this case we discussed we are having two areas, one based on the inner surface radius and one is based on the outside surface radius. So if you see we have AI and A naught in the final equation of rate of heat flow. So discussing overall heat transfer coefficient, को हम प्लेन वॉल के लिए डिस्कस कर चुके थे, which is overall heat transfer coefficient into cross sectional area is equal to 1 over summation R thermal. प्लेन वॉल के केस में यू रिमेंबर कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा था ड्यूरिंग द हीट फ्लो, लेकिन इन दिस केस सिंस inner radius and outside radius of pipe different हैं, so that's why हमारे पास दो overall heat transfer coefficient होंगे, which is ui and u naught. So u into क्रॉस सेक्शनल एरिया को सिंपली हम लिख सकते हैं 1 ओवर समेशन आर थर्मल के. सो इन दिस केस ui into ai, which is based on the inside radius, को हम 1 ओवर समेशन आर थर्मल लिखेंगे, and we have to divide this AI on both sides and we will get this equation. We have to divide and multiply, we have to divide and multiply AI on both sides, or simply we have to divide AI इस equation पे, so we will get this equation. Same is the case for outside overall heat transfer coefficient, and if we divide A naught we will get this equation. So we get 2 overall heat transfer coefficient based on the inside area and outside area. Now one important part of this topic is that how we will select insulating material and what thickness should be of insulating material so that our system does not dissipate or lose heat. So in case of plane wall, this is quite straightforward since cross-sectional area is constant,
सो हमारे पास हम जितनी थिकनेस ज़्यादा करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की, rate of heat flow reduces. In other words, if we increase thickness, thermal resistance of wall increases because our thermal for conduction is delta X divided by thermal conductivity of that material into cross-sectional area. So the more we increase thickness of material, thermal resistance increases. When thermal resistance increases, rate of heat flow decreases. And this is obvious because जितनी हम insulating material की thickness ज़्यादा करेंगे, rate of heat flow कम होगी, and it means the system is dissipating less amount of heat. और हमारा objective भी ये होता है कि if we are adding insulating material कि हमारे पास rate of heat flow कम से कम dissipate हो. Now अगर हम cylindrical pipe और spherical system को consider करें, then the situation is a bit different because अगर हम insulating layer की thickness increase करते हैं, so the rate of heat flow can increase or decrease. We cannot tell straight away because the reason is if we increase the thickness of insulating material for cylindrical system, conduction resistance increases. अगर हम thickness increase करते हैं insulating material की, तो conduction resistance तो increase होती है, लेकिन at the same time convection resistance decreases. So हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इंसुलेटिंग मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा करने से रेट ऑफ हीट फ्लो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. अब ये डिसीजन हम किस तरह लेंगे या हाउ वी विल गेट टू नो दिस, वी विल नो बाय चेकिंग आर कंडक्शन एंड थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम ये इक्वेशन देखें which we have already discussed, k, let's say if we increase thickness of insulating material on a pipe, let's say जिसकी conduction is resistance is let's say this, so conduction resistance तो हमारे पास increase हो गई है by increasing the thickness, लेकिन convection resistance हमारे पास reduce हो रही है. So now we cannot say directly कि rate of heat flow increases or decreases when we increase the thickness of insulating material, because हमारे पास ये term increase हो रही है and this term is decreasing because क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिंस इधर हमारे पास दिस इज वन ओवर एरिया, सो आर कन्वेक्शन डिक्रीजेस. सो लेट्स चेक दिस के फॉर radial system, if we increase the thickness of insulating material, rate of heat flow increases or decreases. So the topic is critical thickness of insulation. पाइप की इंसुलेटिंग लेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए ताकि हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो डिक्रीज हो जाए.
So let's consider this case. We have a hollow pipe जो आपको pink shaded नजर आ रहा है, and there is there is a cover of insulation on outside of the pipe, which is shown in this gray color. So in this equation we are given with one conduction resistance of insulating material and convection resistance for outside surrounding fluid. So this conduction is occurring between the outside layer of insulating material and the outside fluid. Convection heat transfer occur हो रही है. So now the question is rate of heat flow maximum कब होगी? So mathematically we can find it by taking derivative of this equation with respect to outside radius, which is shown by R2 here, and equating it to 0 so that we have a maximum function या हमारे पास maximum value हो for R2, for which rate of heat flow is maximum. Remember, our objective is not to maximize the rate of heat flow but to minimize the rate of heat flow. So the value of R2 at which Q reaches maximum वो हमने किस तरह फाइंड कर लिया है? हमने रेट ऑफ हीट फ्लो की जो इक्वेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी डिराइवेटिव ली है एंड वी पुट इट इक्वल टू 0, so it is obviously giving zero slope. Performing this differentiation and solving for the value of R2, we get critical radius of insulation. So R2 की इस वैल्यू के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो मैक्सिमम होगी. R2 की वो वैल्यू क्या होगी? एंड द वैल्यू इज thermal conductivity of the insulating material divided by outside convection heat transfer coefficient. So this value is basically R2. R2 की अगर हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करें and we put it in rate of heat flow equation, तो वो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी. For the value of R2, if we find it from this equation and put it in rate of heat equation, our rate of heat flow will be maximum. Remember, I am repeating again, हमारा objective ये है कि हम rate of heat flow को minimize करें. Now the question for you guys कि for this particular system, what will be the heat rejected by this pipe if we have zero insulation on it, or या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अगर पाइप को हम बगैर इंसुलेशन के इस फ्लूइड को एक्सपोज करें तो हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो कितनी होगी? रिमेंबर, वो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज पाइप का आउटसाइड टेम्परेचर which is T1 minus ambient fluid या ambient air temperature which is T infinity. Remember, this A will be outside radius of pipe. ये हम कौन से केस को डिस्कस कर रहे हैं? फॉर द केस when there is zero insulation या the pipe is not insulated. So एरिया हमारे पास 2 by R1L होगा. So this equation this equation gives rate of heat flow for the case when we are exposing the pipe without insulation to outside fluid. Remember, rate of heat flow maximum होगी in case of insulation if we put R2 value equal to this. outside radius of insulation अगर हम
कैलकुलेट करें बाय K ओवर H एंड वी पुट इट इन रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन, तो हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो मैक्सिमम होगी. नाउ रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन फ्रॉम सिलेंडर इंक्रीजेज, जो आपको इस प्लॉट में शो हो रही है. अगर हम आउटसाइड रेडियस को क्रिटिकल रेडियस या क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम रखें, R2 is less than R critical. Remember R critical is here. जिसके लिए आपके पास rate of heat flow is maximum. When R जो outer radius है it is equal to R1, उसका क्या मतलब है? It means कि we have no insulation. उस केस में rate of heat flow को हम find कर चुके हैं by Newton's law of cooling. If we are taking outer radius less than R critical, तो हमारे पास rate of heat flow increase हो रही है from the case of without insulation. Remember, मैं again repeat कर रहा हूँ, हमारा objective ये है कि हम rate of heat flow को minimize करें. And what if we take outside radius greater than R critical? तो you can see the trend के रेट ऑफ हीट फ्लो कम होती जा रही है, और जितना हम R2 को R क्रिटिकल से कम करते जाते हैं तो रेट ऑफ हीट फ्लो फर्दर उसकी वैल्यू ड्रॉप होगी. रिमेंबर ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन हम एक्सेल में इसको सॉल्व करेंगे बाय फॉर डिफरेंट केसेस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, और हम आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे एंड यू विल सी के रेट ऑफ हीट फ्लो की इक्वेशन की वैल्यू चेंज होगी. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्रेंड के हमारे पास आउटर रेडियस अगर हम उसको क्वाइट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा करें आर क्रिटिकल से, तो हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ज़ीरो. लेकिन हमें कुछ सेक्रीफाइस करना है, वी हैव टू गो टूवर्ड्स ट्रेड ऑफ, बिकॉज आप देख सकते हैं जितना हम R2 की वैल्यू ज़्यादा करते जाते हैं इट मीन्स के वी आर एडिंग मोर एंड मोर insulating material, which results in increasing of cost of material as well as it is occupying more space. So now it is up to the designer के हमारे पास किस किस्म की restrictions हैं. So and again just to remind you is for this particular case we are ignoring radiation heat transfer, और हम जस्ट वन डायमेंशनल कंडक्शन हीट फ्लो पे फोकस्ड हैं. थैंक यू एंड सी यू इन लाइव क्लास.